हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे RSLOGIX माइक्रो स्टार्टर लाइट सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग देखते हैं, सिमुलेटर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैं वीडियो बनाया था आपके लिए RSLOGIX का कैसे सॉफ्टवेयर ओपनिंग होता है, वो वीडियो में बनाया था। आज से हम सीखेंगे जितना भी प्रोग्रामिंग है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके प्रोग्रामिंग, क्या क्या प्रोग्रामिंग रहता है, कैसे प्रोग्रामिंग एंट्री करेंगे, कैसे उसको इनपुट आउटपुट एड्रेस देंगे, ठीक है। वो सब आज डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑन NONC। आज हम सीखेंगे NONC के बारे में। NO मीन्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। एक स्विच में दो टाइप का कॉन्टैक्ट रहता है, एक NC कॉन्टैक्ट होता है, एक NO कॉन्टैक्ट रहता है। ओके, वो स्विच जो होता है NONC कॉन्टैक्ट को, वो दोनों कॉन्टैक्ट को लेके हम आज प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, देखेंगे प्रोग्राम। Develop a ladder program for the logic so that there are four sides having four number of switches placed at the individual side to activate the siren at control room. देखिए, four sides is given. Okay, this is the side 1, this is the side 2, this is the side 3, this is the side 4. Four sides are there and one siren is there in control room. If any emergency happen in site 1, site 2, site 3, site, anyone anyone can on the toggle the alarm। for siren ऑन करने के लिए हम स्विच को ऑन करना है। ओके, किसी भी एक स्विच को ऑन करने से हम सायरन मेरा ऑन होगा। ये हम अभी प्रोग्राम के अंदर कैसे डेवलप होता है आज हम करेंगे। देखिए, पहले तो चार स्विच दिया है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, ठीक है। ओके, स्टार्ट करेंगे। दिस इज द side 1 switch. Okay, this is the siren. Okay, then I'm placing the second switch. Okay, second switch. Then for for third switch, this is for third switch, third side switch. See, this is the fourth switch. Switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Means side 1, side 2, side 3, side 4. Okay, you have to address. Okay, this is the input. Okay, फर्स्ट के लिए मैं दे रहा हूँ 0.0। ओके, देन सेकंड के लिए 0.1, थर्ड के लिए 0.2, फोर्थ के लिए 0.3, 0, 1, 2, 3। ओके, आउटपुट दिस इज द सायरन। ओके, U 0.0। ओके, you have to write siren। for siren, see edit description here, site 1। okay, this is for edit description। okay, site 2, naming as site 2। this was naming as site 3, and this one naming as site 4। okay, four sides, this is the siren। okay, after writing the program for simulating, some steps are there। okay, go to, this is the for verify file। पहले verify file करना है। okay, verify has completed, no error। okay, then verify project।
then go to download. We have to download the program in VLC. Okay, then go to run the program. अब हम देखेंगे प्रोग्राम के अंदर जाएंगे. डेवलप ए लैडर प्रोग्राम फॉर सर देयर आर 4 switches having 4 number of switches placed at the individual side to activate the siren in control room. Okay, see, this is for side 1. When I am toggle the side 1 switch, the time siren is blowing. Okay, when I am release the switch, siren is in off condition. Same in side 2 also. If we'll on, the output is on. If we'll toggle release the push button, that time the siren is in off condition. Same like side 3 also, you have to check. Side 3 also working. Then side 4 also you have to check. Okay, every side is running. Okay, then move to second program. Go to offline. For new round, click here, then run the branch. New round. The new round. Okay. New round. For writing. See, next program. Third number. Develop a ladder program for the logic so that the lamp should glow when the switch S1 and S2 or S3 and S4 is pressed. See, S1, S2 or S3 and S4. Okay, I'm placing the S1 switch, S2 switch, then output. Sound is not required now. No. S3 switch, S4 switch. With the naming, already we have used up to S3. Okay, then S4, I 0.4, I 0.5, then 6, then 7. For output, I have used Q 0.0. Okay, this is 0, 1. Okay, this is for S1 switch. This is the S2 switch. This is S3, S3, and this is S4. And output is lamp. S1 and S2 or S3 and S4. S1 and S2 or S3 or S4. See, verify the file, verify project, download the program, then go to run. It's online. See, S1 and S2. When S1 and S2 both switches are on, means AND gate, both switches are on, that time the lamp is glowing. Same like or S3 and S4, that time also lamp is glowing.
Okay, see next program. Go to next program. Develop a ladder program so that the indicator lamp should glow when the switch S1 or S2 and S3 or S4. S1 or S2, S1 or S2, S3 or S4, and S3 means S1, S3 will on means indicator will glow, S2 and S4 on means indicator will glow, S1 and S4 on means indicator will glow, and S3, S2 on means also indicator will glow. See the program. Go to offline. Ground. Okay. See. S1 switch, S2 switch, to 7 we have 0. Okay. After that we have to use 8, 9, 10, 11. Output already used 0, 0 and 1. Now we are using 2. And indicator. Indicator. This one for S1. S2, S3, S4. Verify project. Then download the program. Go to run. Then see S1 or S2 and S3 or S4. S1 or S3, the condition is satisfying, indicator is glowing. S1 or S4 also. Okay, see S1, S4 also indicator is glowing. Same like S2, S3 also indicator is glowing. Same S4 also indicator is output is energized. Then apply. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक का प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.